Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your social studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, we have started unit number 1, citizenship, and I have given you a complete introduction of this unit. Today we will start its first lecture, but before that, let's quickly look at the student learning outcome for today, that by the end of today's lecture, all the students will be able to identify civic rights. This is one complete objective, but today we will only cover identify civic rights. Okay? So today all of you will be able to tell your rights as a citizen. यानी कि एक शहर में रहते हुए एक मुल्क के शहरी हैं आप जब, तो आपके क्या क्या राइट्स हैं, आपको क्या क्या राइट्स हासिल हैं, क्या क्या हकूक हासिल हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं या जो आप लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में. So my dear students, the skills that will be developed are recognition, comparison and analysis. So my dear students, let's quickly refresh your knowledge. Who is a citizen and how he gets citizenship. In the previous lectures, we have discussed about citizenship. So quickly tell me who is a citizen. You can pause the video after listening to each question और फिर आप उसको easily answer कर सकते हैं. तो quickly मुझे बताएं एक citizen कौन होता है and how he gets citizenship और उसको citizenship कैसे मिलती है. Very good. हाँ जी, वेरी नाइस, ठीक है, आप सही बता रहे हैं. अ सिटीजन इज अ पर्सन और अ सिटीजन इज a living person of a country. And how he gets a citizenship? When he borns there, he is educated over there, then he gets the citizenship of that country. Tell at least 2 rights of a citizen. So we have discussed about rights and responsibilities of a citizen. आपको मुझे कोई 2 rights बताने हैं which you enjoy as a citizen of Pakistan. Yes, availability of water, electricity, education, healthcare facilities, food. Very nice. And now tell me, what can you do to make your society a better place to live? आप क्या क्या काम कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को एक बेहतर प्लेस बनाने के लिए? Yes, if everybody will perform his or her duty, then we can make our society a better place. Now tell me, what is meant by civic sense? हमने पहले पढ़ लिया है ये, आपको ऑलरेडी इसके आंसर्स पता है. थोड़ा सा फोकस करें and then you can easily answer these questions. What is civic sense? Yes, civic means city and sense means जो आपको सेंस चाहिए या वहाँ पर रहने के लिए कैसे जो है आपको एक सिटी के अंदर उसको बेटर प्लेस बनाने के लिए कौन कौन सी आप डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं, that is called civic sense. Now my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. You are the best community which has been brought forth for mankind. You command what is proper and forbid what is improper and you believe in God. So my dear students, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो बेहतरीन उम्मत है और हमें अल्लाह ताला ने आगे भेजा है. हमें आगे क्या करना है कि हमें गलत कामों से रोकना है लोगों को और सही कामों की तरफ जो है उनको रागिब करना है. और हमें जो है हम अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव करते हैं. Now what does civic means? City or town or anything related to citizens of a city or town. यानी कि एक शहर, उस मुल्क के उस शहर के रहने वाले लोग, that means civic. And so what are civic rights and responsibilities? Civic rights and responsibilities are those duties and rules related to citizens of a country. ठीक है, तो civic sense क्या है? वो rights और responsibilities हैं जो कि एक मुल्क के शहरी जो हैं उनके लिए होती हैं, यानी कि उनके कुछ rights भी होते हैं और उनकी कुछ responsibilities भी होती हैं. Okay, now civic rights, let's quickly talk about this. So what are civic rights? That from whichever religion, from whichever caste, culture you belong to,
you must be allowed to practice it freely. यानी कि आप जिस मर्जी मज़हब से, जिस मर्जी कल्चर से, जिस मर्जी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो, आपको अपना रिलीजन और अपनी बात करने का जो है वो इख्तियार होना चाहिए. देन आपके पास आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए. अगेन देन यू मस्ट हैव द राइट टू कास्ट वोट्स. आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. आपको सबके लिए जो है वो लॉ जो है वो सेम होना चाहिए. एंड आपके पास इक्वल राइट टू बाय होना चाहिए. यानी कि ये नहीं कि किसी को ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, किसी को कम चीज़ें मिल रही हैं. एवरीबडी इज़ इक्वल. देन राइट टू एजुकेशन. दैट मीन्स कि आपके पास तालीम हासिल करने का भी हक है आपके पास, हर शहरी के पास. So these were some civic rights. Now let's move towards an activity. For this activity, you need a blank color sheet. You will write a caption on the top of it, Bill of Student Rights. On one side, under this caption, write those rights they have as a student. ठीक है. अब आपके पास एक colored paper होगा, उसके ऊपर आप ये वाली heading देंगे, बिल ऑफ स्टूडेंट राइट्स. और उसके बाद आपके पास जो भी आपके राइट्स हैं एज अ स्टूडेंट, यू विल राइट दोज राइट्स. नाउ हेयर इज अ sample bill of student rights. So some rights are written here. You have the right to ask question. You have the right to be listened to carefully. You have the right to be taken seriously by your classmates. You have the right to be treated with respect. You have the right to have your ideas discussed, not you personally. ठीक है. अब आपके आइडियाज़ और आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. ये नहीं कि आपकी पर्सनालिटी का मजाक उड़ाया जाए या आपके ऊपर बात की जाए, तनकीद की जाए. बात हमेशा आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ की होनी चाहिए, उनको डिस्कस करना चाहिए. एंड एवरी सिटीजन, एवरी स्टूडेंट हैज़ द राइट टू डिस्कस हिज और हर आइडिया, to give their point of view, and they must be respected. This is a right. Every human being has this right. Okay, so you can pause the video and you can do this activity by writing your own rights as a student. I hope everybody has done this activity and now you are fully aware of your rights as a student. Now let's move forward towards page number 6. Quickly open this page. I hope everybody has opened page number 6. Now let's start reading. Citizenship. Civic rights and responsibilities. The term civic is related to duties or activities of people to their city, town or community. The word civic is derived from Latin word civics, which means related to citizen. So my dear students, civic means citizen, city, and as a citizen or living in a city, you have some rights and some responsibilities towards that city. So civic rights and responsibilities are those duties and rules that are related to a citizen of a country. Every citizen is granted some rights since their birth. These are basic rights for their security of a person. Similarly, the citizens have some responsibilities too, which they have to fulfill in order to make their community a better place for living together. So my dear students, as a citizen of Pakistan, आपके कुछ birth right हैं, यानी कि आपके पैदाइशी हकूक हैं कुछ जो आपको ज़रूर मिलने चाहिए. उनमें से एक ये है कि everybody has a right to security, यानी कि आपको सिक्योरिटी ज़रूर मिलनी चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए. इसी तरह अगर किसी सिटीज़न के राइट्स हैं तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसलिए होती हैं ताकि हम अपने शहर को एक बेहतर जगह बनाए रहने की. ठीक है. Now let's move forward towards civic rights. Quickly put your fingers where I will read. The rights you enjoy as a citizen are right to life, freedom of practicing any religion, freedom of expression, right to live according to your will, political rights such as can vote and select any leader of your choice, right to buy property anywhere in your country, right of privacy, right of fair trial, right to get basic facilities such as water, gas, electricity and education.
So my dear students, आपके civic rights जो हैं, these are on your screen which I have just read. यानी कि आपके पास कुछ political rights हैं कि आप किसी भी लीडर को, अपनी पसंद के लीडर को, अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को जो है वोट कास्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आप जहाँ पे भी चाहें पाकिस्तान में अपने मुल्क में कोई जगह ख़रीद सकते हैं. इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलनी चाहिए, फूड मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, आपके पास ज़िंदा रहने का हक है, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है. सो देखिए आपके पास कितने सारे राइट्स हैं जो कि हम डेली बेसिस पे इंजॉय कर रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार रहे हैं. So my dear students, your warm-up for today is the rights and responsibilities that are related to the citizen of a country are known as civic rights and responsibilities. So now you are able to tell कि civic rights वो rights हैं जो कि एक citizen जो है, जो कि एक मुल्क में रहता है, उसके पास होते हैं. Right to life, education, freedom of religion and expression are civic rights. ठीक है, अपने मज़हब की प्रैक्टिस करना, अपनी बात को आज़ादाना तरीके से करना, अपनी ओपिनियन आज़ाद तरीके से पेश करना, आज़ादी का ज़िंदा रहने का हक हर इंसान के पास होना, हर जानदार के पास ज़िंदा रहने का हक है, ये उसका बर्थ राइट है. These are some very common civic rights which every human being must have. So my dear students, from here we will move forward towards the practice. For practice, you will be provided with a printed worksheet by your teacher. What are your rights? We are people living together in one world. As human beings, we have a number of rights and responsibilities to ourselves and others. Can you think of all the rights you have? So my dear students, आप एक मुल्क में रहते हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके कुछ राइट्स हैं. सो राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट राइट्स. सो क्या आप जो डेली बेसिस पे राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, थिंक अबाउट देम, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने राइट्स ऑफ अ स्टूडेंट लिखे थे. अब आप डेली बेसिस पे एज अ सिटीजन जो भी राइट्स एंजॉय कर रहे हैं उनके बारे में यू विल लिस्ट डाउन. सो माई राइट्स, आई हैव द राइट to a safe place to live. ठीक है, first one is done for you. You will write rest by yourself. ठीक है, अभी हमने we have discussed about a number of rights. You can also take help from your book. So my dear students, you can pause the video and you can finish the worksheet. Now let's move forward, my dear students. Now quickly note down your homework given on page number 6. Home activity number 1. If a person is detained illegally, then what should he do? Write your answer according to the Constitution of 1973. So my dear students, अगर एक आदमी को पकड़ लिया जाए, उसको कैद कर लिया जाए illegally, यानी कि उसने कुछ नहीं किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई क्राइम नहीं किया और उसको illegally पकड़ लिया जाए, तो उसको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आप क्या करेंगे उसके हक के लिए. So, according to 1973 Constitution, an independent judiciary has been provided in 1973 Constitution. Judiciary safeguards the fundamental rights of the people of Pakistan. So, इस Constitution के according जो कि 1973 में पास किया गया था, इसके according हर पाकिस्तानी शहरी के पास judicial हक है कि उसको judiciary जो है वो equally provide की जाएगी और वो अपने जुडिशल राइट्स जो हैं यानी कि अपने जो कानूनी जो भी हकूक़ हैं वो उसको मिलेंगे. सो उसके तहत आप किस तरीके से जो है अपने फ्रेंड को या जो एक शख्स है जिसको गलती से पकड़ लिया गया है आप उसको कैसे जो है बचा सकते हैं या आप उसके लिए क्या कर सकते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑन योर स्क्रीन. नाउ यू आर एबल टू राइट अबाउट इट योरसेल्फ. यू कैन यूज़ योर नोटबुक फॉर दिस पर्पज़. Okay, my dear students, from here we will move forward towards page number 17. You will do question number 3 and question number 7. What is the meaning of civic? Very easy. Plenty of times we have done it. What rights do you enjoy as a citizen of Pakistan? As a citizen of Pakistan, whichever rights do you enjoy? अभी हमने worksheet में भी किए हैं. You have to write them down in your notebook. So, my dear students, this is very easy. You can do it in your homework easily. Now let's move forward. So in the next lecture, we will study
why civic rights and responsibilities, about rights of civic responsibilities and how they may change over time. नेक्स्ट लेक्चर में हम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं विद टाइम चेंज हो जाती हैं. सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ एंड हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज़.